Good morning, dear students. I hope you understood the previous part of the chapter, the law and the social justice. I explained you about the tragedy that was the Bhopal gas tragedy. Connected to that videos, I want to explain you what is workers' worth in our India. इंडिया में वर्कर्स की कंडीशन क्या है. Basically, as you know, when any construction work is going on, we are not following any safety measures for these workers. If we are to understand the events leading to Bhopal disaster, we have to ask, why did the Union Carbide set up its plant in India? That first question you should have in your minds कि यहाँ क्यों लगाया इसने ऐसा प्लांट, जब उसको पता था कि दैट इज़ अ पॉइजनस गैस, फिर भी उसने इस गैस को इंडिया में स्टार्ट किया, इस पेस्टिसाइड्स को इंडिया में बनाना स्टार्ट किया. तो लेट अस डिस्कस द रीज़न बिहाइंड इट. वन रीज़न वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज़ फॉर चीप लेबर. भारत में आने का मेन मकसद क्या है इन फॉरेन कंपनीज का? बिकॉज देयर इज़ अ चीप लेबर, सस्ती लेबर है यहाँ. वेजेस दैट द कंपनीज पे टू द वर्कर्स से इन द यूएसए आर फार हायर देन व्हाट दे हैव टू पे टू वर्कर्स इन द poorer countries like India. As we compare the country between USA and India, you know the wages, you know the workers class salary. They have to pay a very high amount in USA, but in India they just have to pay a very few money. For lower pay, companies can get longer hours of the work because there the fixed hours are there. People are not ready to work more than that, but in India they can work for the longer hours. So this was the reason also. Additional expenses such as housing facilities for workers are also very few. In USA they have to give many facilities to their workers, but in India no such cost has been added to their salaries or the wages. Thus, so this was the reasons companies can save costs and earn higher profits. I already told you, those who are the industrialists, those who are the company owners, what do they wanted? They just want to earn more and more profit. How they can earn? By with the help of the cost cutting. So cost cutting can also be done by other more dangerous means. I explained you with the help of the example. Lower working conditions, including lower safety measures, are used as ways of cutting cost because they don't have to implement so many machines in our country to give the safety to these workers. UC plant. What is UC plant? That is the American company, those who have plant in India, in Bhopal. Every safety device was malfunctioning or was in short supply. जितने भी सेफ्टी स्टेप दिखाए ना उन्होंने, दैट वाज माल फंक्शनिंग, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. Between 1980 to 1984, the worker crew for the MIC, MIC कौन सी गैस है मैंने बताया था, that you have understood in the previous videos. तो plant was cut in half from 12 to 6 worker. इन्होंने MIC plant में जो वर्कर 12 होते थे उसको कट करके कितना कर दिया, 6. तो वेजेस और कट गए. द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग, ठीक है, इस पे वर्क करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है. एंड व्हाट इज द ट्रेनिंग टाइम पीरियड? दैट इज 6 months. और इसको करके इंडिया में कितना कर दिया, जस्ट 15 days. द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द MIC प्लांट वॉज एबॉलिश. तो जो रात को वर्कर वहाँ काम करते थे, उनकी लुक आफ्टर करते थे, उनको उन्होंने एबॉलिश कर दिया. सो दिस वॉज द रीज़न. एज वी कंपेयर नाउ, ठीक है, अब हम यूसी सेफ्टी स्टेप्स को भोपाल में वर्सेज यूएसए में दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं. At West Virginia, USA, computerized warning and monitoring systems were in place. ठीक है, यूएसए में जब उनको प्लांट लगाना था, वही कंपनी है, सेम कंपनी है. डिफरेंस देखो, वहाँ पर उन्होंने कैसा वार्निंग अलार्म लगाया, कंप्यूटराइज, जो मॉनिटर कर रहा सिस्टम को, हर चीज़ को चेक कर रहा था. Whereas the UC plant in Bhopal relied on manual causes and the human senses to detect gas leaks. यहाँ पर क्या किया कि लोग ही देख लेंगे जी, आ रही है, लीकेज हो रही है या नहीं हो रही है, जब स्मेल आएगी तो पता चल जाएगा. एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट, एमरजेंसी एविक्यूएशन प्लान्स वर इन प्लेस. ठीक है, वहाँ पर निकलने के लिए लोगों को रास्ता बनाया गया, एमरजेंसी एग्जिस्ट बनाया गया, बट नॉन एग्जिस्टेंट इन भोपाल. पर भोपाल में ऐसा कुछ भी नहीं अरेंज किया गया. वाई आर देयर सच शार्प डिफरेंस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अक्रॉस कंट्रीज? अब दोनों ही कंट्रीज हैं, सेम कंपनी काम कर रही है, पर दोनों में डिफरेंसेस थे. वाई? And even after the disaster happened,
Why was the compensation to the victim so low? अगर ये ऐसा वहाँ पर होता ना, तो do you know how they have to pay? But in India, just they have paid the 470 million. One part of the answer's line is what perceived as the worth of the Indian worker. हमारे यहाँ पर ह्यूमन बींग की कोई वैल्यू नहीं है. दिस वॉज द मेन रीज़न. वाई दिस वॉज द रीज़न? बिकॉज देर इज सो मच unemployment. If one person is leave the job, another place replace immediately. There are many workers who are willing to work. हमारी कंट्री में बहुत सारे वर्कर्स हैं जो अनसेफ कंडीशंस में भी काम करने के लिए रेडी हैं. मेकिंग यूज़ ऑफ वर्कर्स वल्नरेबिलिटी, क्योंकि वो अपनी इच्छा से काम करते हैं. इन हजार्डियस सिचुएशंस में भी एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेस. वो बॉदर ही नहीं करते. एम्प्लॉयर्स चेक ही नहीं करता कि सेफ्टी स्टेप्स है या नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो वर्थ फॉर द वर्कर्स लाइफ इन आवर कंट्री. There's even so many years of Bhopal gas tragedy. There are regular reports of accidents in construction sites. अभी भी इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद, इतने लोगों को खोने के बाद भी, still you have heard and the newspapers are filled with this accident in construction sites, mines or factories due to the callous attitude of the employers. तो employer का attitude की वजह से the people have to become the sufferers. So I hope till here you understood the topic. Thank you. Have a good day.